जय जगन्नाथ, जय श्री राम। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ एंड इमीडिएटली स्टार्ट करिए क्वेश्चन। ऑलरेडी लेट हो गलानी 10 मिनिट। ओके चलो ठीक अच्छी 50 वाचिंग तो स्टार्ट करिए हमें ताले। हो चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम पाखे अच्छी सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग क्लॉट or coagulation is formed mainly by the network of a fibrin in which the dead and damaged formed element of blood are trapped. Inactive fibrinogen is converted to fibrin by the hormone thrombin. The prothrombin is converted into thrombin by the enzyme complex thrombokinase. The platelet or injured tissue release certain factor which is initiate the coagulation. कौन हबो कोटा पचारछि इनकरेक्ट को कौन हबो आंसर? इजी क्वेश्चन आंसर दियो समझते। गुड इवनिंग चलो आंसर कौन हम जानी जनरली सपोज गोटे जगह हमर धर इंजुरी हो गला सपोज हमर हाथ एटा तो हाथ रे सपोज कोन जगह रे कट हो गला तो ये जो कट जगह रे जनरली इंजुरी टिश्यू रिलीज करियो कोन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड जो प्लेटलेट ए जगह रहला ब्लड रो प्लेटलेट रिलीज करिवो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जोटा रिलीज करिवो ताको हमें कहउचे इंट्रिंसिक फैक्टर एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जोटा रिलीज करिवो ताको हमें कहउचे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक दिस वन इज इंट्रिंसिक। तो जनरली टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन दी जगह कंबाइन हे की फॉर्मेशन करिवे कैल्शियम प्रेजेंस रे थ्रोम्बोकाइनेज कोन करिवो ना जनरली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट करिवो। थ्रोम्बिन कोन करे फिब्रिनोजेन को बा इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करिवो फिब्रिन रे राइट। ताले कोन आंसर समस्त आंसर आई थिंक परफेक्ट आस्तिबो बी दैट इज हम जानि छे क्लॉट और कोएगुलेशन इज फॉर्म्ड मेनली बाय द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन। आ फाइब्रिन टा होचे ओटे जाल भलिया जो जगह रे कट हेतो से जगह रे ओटे जाल भलिया बिछे की रहइबो। तो एया दैट इज टिश्यू जगह रो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन दी जण मिसिकरी थ्रोम्बोकाइनेज जनरली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे एंड थ्रोम्बिन जनरली फिब्रिनोजेन को फिब्रिन रे। दैट इज क्लियर। चलो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट करिया पे थ्रोम्बोकाइनेज एंड फिब्रिनोजेन को फिब्रिन रे कन्वर्ट करिया पे थ्रोम्बिन इंपोर्टेंट हैला। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे थ्रोम्बोकाइनेज देन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन। बट इट पचारछि इनएक्टिव फिब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन बाय द हार्मोन सो दिस इज इनएक्टिव बट दिस इज इनकरेक्ट बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन चलो select the incorrect statement from the following when the platelet release certain factor which is initiate the clotting it is known as intrinsic pathway। हमें जानि छे जनरली दीटा पाथवे गोटे होची इंट्रिंसिक पाथवे एंड अनदर वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे रे कोन हुए ना जनरली प्लेटलेट टा रिलीज करा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सट्रिंसिक पाथवे रे इंजुरी टिश्यू जोटा रिलीज करा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इंजुरी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन दीटा को मिसिकरी थ्रोम्बोकाइनेज। चलो कौन हम आंसर ताले आंसर कौन हम व्हेन द प्लेटलेट रिलीज द सर्टेन फैक्टर व्हिच इज इनिशिएट द क्लॉटिंग इट इज नोन एज इंट्रिंसिक पाथवे परफेक्ट। व्हेन द इंजुरी टिश्यू रिलीज सर्टेन फैक्टर व्हिच इनिशिएट द क्लॉटिंग जेतबेले क्लॉटिंग पाई जदी इंजुरी टिश्यू जो फैक्टरटा रिलीज करिवो ताको हम कहउचे एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड प्लेटलेट रिलीज कला इंट्रिंसिक पाथवे दीटा सेंटेंस परफेक्ट। हमको इनकरेक्ट पचारछि जनरली कैल्शियम प्लेज ए माइनर रोल भूल हमें जानि छे कैल्शियम प्लेज ए मेजर रोल सो एट तुमको भूल जना पड़ी होची। कोएगुलेशन प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द इंजुरी पार्ट तो सी इज इनकरेक्ट। मते एटी को जनरली ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन हबो ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेरोटोनिन हेपारिन ना थ्रोम्बोकाइनेज। कौन हम ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज ना हेपारिन ना सेरोटोनिन दैट इज हेपारिन परफेक्ट। देन मते को कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। जनरली प्लाज्मा रो जो एल्बुमिन रहला द प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन रो मेन फंक्शन कोन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन कौन हम बढ़िया अछि समस्त आंसर मु देखि पाउछि स्क्रीन रे समस्त आंसर परफेक्ट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ
प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन एल्बुमिन रो मेन काम कोन आमे जानिचे फिब्रिनोजेन रो काम होची फॉर द क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ग्लोबुलिन रो काम होची फॉर द डिफेंस मेकानिज्म एंड द एल्बुमिन फॉर द ऑस्मोटिक बैलेंस सो समस्त आंसर परफेक्ट अच्छा तापर जदि हमें कहबा व्हाट इज सेरम एनीवन हु कैन से व्हाट इज सेरम सेरम कोन बढ़िया अछि एमडी कौशर लिप्सा को कोन हो व्हाट इज सेरम सूरज विश्वजीत ठीक अछि विश्वजीत बढ़िया लक्ष्मी दीप्तिमयी सोनू सरोज लिपिका अच्छा कोन हो व्हाट इज सेरम सेरम कोन दैट इज द हम जदि कहया प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर बा इफ यू रिमूव द क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजेन फ्रॉम द प्लाज्मा इट इज कॉल्ड एज सेरम स्ट्रिक्टली मन रखियार अछि एंड दैट इज नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेरम को नेकी पसार चारछि एंड आल्सो दैट इज हेपारिन को नेकी पसार चारछि आता मते को दैट इज आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कहार ओटे डिक्रीज नंबर हे गले बा कहार नंबरटा डिक्रीज हे गले मोस्टली क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन टा अफेक्टेड हबो कहार नंबरटा डिक्रीज हे गले क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन अफेक्टेड हबो फिब्रिनोजेन ग्लोबुलिन एल्बुमिन सॉरी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भितरु कहार नंबरटा प्लेटलेट परफेक्ट देन मते को कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी यदि तुम क्वेश्चन पचरे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी आरबीसी रो मेन फंक्शन कोन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी मधुस्मिता बढ़िया अछि दीप्तिमयी प्रताप सरोज डॉक्टर प्रभात बढ़िया अछि द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी टू ट्रांसपोर्ट द गैस ओके राइट एंड आरबीसी रो कलर रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चलो एंड जदि एठा में क्वेश्चन पचारिया जनरली मते को कि एबी ब्लड ग्रुप रो एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा राइट और रॉन्ग आई एम सेइंग द सेंटेंस इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम if a person having blood group AB and its antigen is present on the plasma ठीक ना भूल नमस्कार पतित पावन कौन हो false हमें जानी चाहिए strictly that is blood group रे antigen is present on the surface of RBC antibody present on the plasma यदि को हबो O in O blood group बोल से क्वेश्चन सुनो समस्त आंसर false आसिला in O blood group antigen is present on in O blood group antigen is present on RBC surface ठीक ना भूल in O blood group antigen is present in RBC surface बा surface of RBC रे O blood group रो जो पर्सन रो O blood group अछि तार antigen टा present on surface of RBC false हमें जानि छे generally O blood group रे antigen is absent and generally antibody present थाए blood from the alveoli to tissue exchange of gas perfect RBC is much more important for the gaseous exchange between the alveoli and the blood vessel and also important for the gaseous exchange between the blood vessel and the tissue and जोटा कि that is breathing रे पड़ी छे perfect अछि शुभंकर oxygenated blood from the alveoli to the tissue and exchange of gas perfect चलो तो ये रहला कोन हमरो जनरली छोट छोट क्वेश्चन हम पचारिले एबीओ ब्लड ग्रुप देन मते को कि जनरली इन द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एंड हमें समझ जानि छे एग्जाम पाखी आसलानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कंडीशन जोटा हुए जनरली मदर कर को ब्लड ग्रुप थाए बा जनरली मदर कर आरएस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड फीटस रो कोन थाए श्रुति ओयूटी एग्जाम स्ट्रिक्टली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोन हो दैट इज मदर कर आरएच नेगेटिव मदर स्वयं एंड आरएच पॉजिटिव फीटस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस then next question jiba which enzyme cause the conversion of prothrombin into the thrombin को एंजाइम जनरली कॉज करे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन या पर तुमको गोटे रैपिड फायर कराबो 10टा क्वेश्चन ए क्वेश्चन परे ता परे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which enzyme cause the conversion of prothrombin into thrombin कोन हबो जनरली हम जानि छे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कंट्रोल करे थ्रोम्बोकाइनेस आंसर इज सी समस्त का आंसर दैट इज थ्रोम्बोकाइनेस परफेक्ट रैपिड फायर रो प्रथम क्वेश्चन तुम पाखे रहइबो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल को सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल रे टॉक्सिसिटी टा इंक्रीज होबा कोन को जाय टॉक्सिसिटी इंक्रीज होबा कोन को जाय ट्रॉपिक लेवल रे टॉक्सिसिटी इंक्रीज होबा कोन को जाय को व्हाट इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द इंक्रीज ऑफ टॉक्सिसिटी इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन परफेक्ट and generally toxic टा कोन मर्क्यूरी आउ डीडीटी परफेक्ट अछि
तापर मते को जनरली जदि हम देखिया व्हाट इज द shape of the uterus, generally uterus ର shape कोण, what is the shape of the uterus? Answer pear, inverted pear ना inverted pyramid. What is the shape of uterus? कोण हो pear ना inverted pear ना inverted pyramid? कोण हो answer inverted pear. Perfect. Next question जीवा जदि species area relationship किए देथिले, who was the scientist who gave the species area relationship? species या area भितर relationship को scientist देथिले कोन आंसर? who was the scientist who gave the species area relationship? Perfect. inverted pear होची uterus ର shape. species area relationship Alexander von Humboldt, अर्जिता Alexander von Humboldt. Perfect. then जदि एटा में क्वेश्चन पचारिया जनरली को प्लांट हार्मोन गोटे क्वेश्चन पचारे, सपोज को प्लांट हार्मोन इंपोर्टेंट टू प्रमोट द सीड डॉर्मेंसी को प्लांट हार्मोन प्रमोट करे, व्हिच इज द प्लांट हार्मोन इज इंपोर्टेंट टू प्रमोट द सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करे किए? सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करे किए? कौन हो आंसर? सी डॉर्मेंसी को प्लांट हार्मोन प्रमोट करे? एब्सिसिक एसिड. स्ट्रिक्टली मन रखियो प्रमोट करे एब्सिसिक एसिड, कार आंसर ऑक्सीजन आसिला, दैट इज एमडी कौशल. स्ट्रिक्टली मन रखियो एब्सिसिक एसिड होची जनरली प्रमोट करे हैला एब्सिसिक एसिड. देखो व्हाट इज सी डॉर्मेंसी? एनीवन? व्हाट इज सी डॉर्मेंसी? हु कैन से व्हाट इज सी डॉर्मेंसी? सी डॉर्मेंसी मींस कोन? एब्सिसिक एसिड संजुला बढ़िया. एमडी कौशल. सी डॉर्मेंसी माने कोन? व्हाट इज सी डॉर्मेंसी? सी प्रसाद. सी डॉर्मेंसी माने फेवरेबल कंडीशन थिबा सत्वे इफ द सीड इज इनेबल टू जर्मिनेट और इफ द सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट इवन आफ्टर द फेवरेबल कंडीशन इज देयर. फेवरेबल कंडीशन थिबा सत्वे जदी गोटे सीड ता जर्मिनेट करि पारुनी, इट इज कॉल्ड एज सी डॉर्मेंसी. ता पे बहुत रीजन हे पारे. आइदर सीड ऊपर कवरिंग ता जो सीड कोट ता टाइट हेतै पारे, आइदर एब्सिसिक एसिड थाई पारे. सो एब्सिसिक एसिड होची जनरली कोन करे? बढ़िया अच्छे लिपिका शुभंकर सुशांत. तो एब्सिसिक एसिड व्हिच प्रमोट द सीड डॉर्मेंसी एंड सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन किए करे? व्हिच हार्मोन इज इंपोर्टेंट टू ब्रेक डाउन द सीड डॉर्मेंसी बाय सीड प्रोडक्शन रे किए? सीड प्रोडक्शन रे किए बा हमें कहि परिया व्हिच इज इंपोर्टेंट टू ब्रेक डाउन द सीड डॉर्मेंसी? कोन हो? ब्रेक डाउन द सीड डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन किए करे? समस्त का आंसर आस्ती ठीक आस्तिबो. सी डॉर्मेंसी जिबरलिन हैला. तो जनरली सी डॉर्मेंसी को प्रमोट करे एब्सिसिक एसिड एंड जिबरलिक एसिड होची सी डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करे. सेति पई एनसीईआरटी रे गोटे लाइन लिखा छै जिबरलिन इज इंपोर्टेंट फॉर द सीड प्रोडक्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जिबा. Blood is a special connective tissue which consists of fluid matrix, plasma, formed element, and is the most commonly used body fluid in the most of the higher organism. कौन आंसर? जनरली हमें जानी छे ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. कौन आंसर को? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक ना नहीं? परफेक्ट. परफेक्ट अच्छी. कनेक्टिव टिश्यू हो सब किए ना? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एमान सब जति कनेक्टिव टिश्यू. ता भीतर ब्लड ता होचे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. परफेक्ट. एंड जनरली हम जति ब्लड को तार कंपोनेंट देखिए हमें जानि छे ब्लड रे होचे 55% कोन पाया? प्लाज्मा पाया एंड 45% कोन पाया? दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट माने जो एलिमेंट जो गुडा को फॉर्म होचंदी. तो फॉर्म्ड एलिमेंट के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट. सो जनरली ब्लड रे हमें प्लाज्मा पाया एंड आल्सो फॉर्म्ड एलिमेंट भी पाया. तो फॉर्म्ड एलिमेंट अछि एंड दैट इज प्लाज्मा भी पाइले एंड होचे मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड. ताल ऑल ऑफ दिस परफेक्ट. समस्त आंसर ऑल ऑफ दिस ही आस्तिबो. रेडी समस्त आंसर. रजत, चंडीगढ़. ओके बढ़िया. चलो देन मते को कि जनरली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट व्हाट इज द जदि हम देखिया न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट एमानकर मोस्टली कोन अछि? फागोसाइटिक प्रॉपर्टी अछि. बा जदि कोनसी फॉरेन पार्टिकल आसीबो ब्लड रे, सो फागोसाइटिक प्रॉपर्टी माने सपोज फॉरेन पार्टिकल को एमाने एनगल्फ कर देबे.
सो सपोज फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कले बा फागोसाइटिक प्रॉपर्टी अछि न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट तो मते को कि जो फागोसाइटिक प्रॉपर्टी अछि ये को टाइप रो इम्यूनिटी बा को टाइप रो बैरियर दैट इज फिजिकल बैरियर ना फिजियोलॉजिकल बैरियर ना सेलुलर बैरियर कोन आंसर फिजिकल ना फिजियोलॉजिकल ना सेलुलर ना साइटोकाइनिन कोन हो आंसर काली ए क्वेश्चन तुम कहितली फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर सेलुलर बैरियर साइटोकाइनिन बैरियर कोन हो सेलुलर बैरियर परफेक्ट समस्त आंसर सेलुलर बैरियर गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर सब के फिजिकल बैरियर सब के फिजिकल बैरियर एग्जांपल दियो फिजिकल बैरियर श्योर आनी एट होम फिजिकल बैरियर हो के स्किन एंड म्यूकोस कोटिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो ये सब हो फिजिकल बैरियर चलो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन को किए फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन हो फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड हम जानिचे एसिड इन स्टोमक saliva in mouth and tears from eye these are the physiological barrier perfect समस्त को थिबो राइट ताल मते को कि जनरली एउट जने हम क्वेश्चन फ्रेम करिया जनरली which cell in the stomach ऑप्शन दउची स्टोमक रो को सेल भलसे सुनो स्टोमक रो को सेल इंपोर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ HCl जनरली हम जानिचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रांग एसिड तो ये ही स्टोमक रे एसिडिक कंटेंट को मेंटेन करूची तो को सेल रिलीज करे ऑप्शन पेप्टिक सेल ना जाइमोजेन सेल को सेल है ऑप्शन आंसर दबो ना पैरेटल सेल ना ऑक्जिंटिक सेल ना बोथ सी एंड डी ना बोथ ए एंड बी कौन आंसर पेप्टिक सेल ना जाइमोजेन सेल ना पैरेटल सेल ना ऑक्जिंटिक सेल ना बोथ सी एंड डी ना बोथ ए एंड बी कौन हो दैट इज पैरेटल सेल परफेक्ट पैरेटल सेल और ऑक्जिंटिक सेल विल रिलीज HCl देन मते को कि जनरली इफ विटामिन B12 अब्जॉर्ब होउनी जदी विटामिन B12 गोटे लोकर अब्जॉर्ब होउनी ताले जनरली तार को सेल अफेक्टेड थिबो पेप्टिक और चीफ सेल ए ऑप्शन को पेप्टिक सेल एटी ऑप्शन आउतरे देउची जदी जनकर विटामिन B12 अब्जॉर्ब होनी पेप्टिक सेल रे डिफेक्ट अछि ना जाय पेप्टिक सेल रे डिफेक्ट अछि ना ऑक्जिंटिक सेल रे डिफेक्ट अछि आ दीटा भीतर आंसर दियो जनरली को सेल रो डिफेक्टेड हेले दैट इज हम कहि परे विटामिन B12 रो अब्जॉर्ब होबा प्रॉब्लम हबो यार आंसर कोन हला जाना पहले तो बोथ पैरेटल सेल ऑक्जिंटिक सेल आंसर होची एटा हला बोथ सी एंड डी पैरेटल सेल इज अदरवाइज कॉल्ड एज ऑक्जिंटिक सेल नेक्स्ट क्वेश्चन तम अगर अछि विटामिन B12 जदी अब्जॉर्ब होनी गोटे पर्सन रो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी रीजन जनरली को सेलटा अफेक्टेड थिबो आंसर कोन हबो पेप्टिक सेल जहार आंसर होची पैरेटल ऑक्जिंटिक सेल तार होची ठीक जनरली हम जानि छे ऑक्जिंटिक सेल रिलीज करे कोन HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर ही रेस्पोंसिबल फॉर द absorption of fat sorry absorption of vitamin B12 तो आंसर होची कोन हबो ऑक्जिंटिक सेल हला ऑक्जिंटिक सेल जो माने ऑक्जिंटिक सेल सेवन ठीक अछि चलो नेक्स्ट जीवा हाउ मेनी मेकानिज्म आर देयर इन द फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन योर बॉडी जनरली हाउ मेनी मेकानिज्म आर देयर फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इन योर बॉडी कोन आंसर केतेडा मेकानिज्म अछि ब्लड क्लॉटिंग करिया पे हम बॉडी रे वॉइस ऑफ कृष्णा how many mechanism are there in your body for the blood clotting correct answer generally how many mechanism that is 3 okay that is answer is 3 चलो नेक्स्ट जीवा lymph is known as what is lymph
क्वेश्चन lymph टाको हम जनरली कोन पाई परिया lymph is known as को आंसर कोन हो lymph is known as lymph is known as आंसर दियो ओके चलो बोथ टिश्यू फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखो जनरली कौन हुए ना गोटे जस्ट शॉर्ट रे तुम बुझिया सपोज दिस इज द ब्लड वेसल एंड जनरली आम जानी सपोज दिस इज द जीआई ट्रैक्ट एंड सपोज दिस इज द लंग्स जनरली ब्लड कौन करे ना लंग्स रु ऑक्सीजन टा आसिक ब्लड रे डिजोल्व हुए किए ताको कैरी करे आरबीसी सेमती जीआई ट्रैक्ट रु जेतले डाइजेशन परे ग्लूकोज गुडा का अब्जॉर्ब हुए ब्लड रे ब्लड कौन करे ताको ने डिफरेंट टिश्यू पाखरे नहीं पहुंचाए तो जनरली आ गोटे कांसेप्ट हम मन रखिया ब्लड नेवर फ्लोज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल बीवी मींस ब्लड वेसल तो जनरली जेतले ब्लड डिफरेंट सेल को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दबो ब्लड केबे भी सेल को पीए दबनी बा ब्लड टा ब्लड वेसल भीतर बाहर जायनी सम फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रिलीज हो जो तरीके कौन थी ना आरबीसी नथिबो एंड मेजर प्रोटीन भी नथिबो तो जनरली रिलीज हो टिश्यू भीतर को एंड जनरली जो फ्लूइड एवरी डे रे जो देखिबा 20 लीटर वाला फ्लूइड रिलीज हुए एंड से फ्लूइड देकी ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुडा को सब सेल बाकू आसीबे से फ्लूइड जेतले सेल भीतर जो स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस भीतर पळे आसीबो दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड बा जेहेतु टिश्यू भीतर पळे आसीबो ताको हम कहले टिश्यू फ्लूइड तो 20 लीटर फ्लूइड अगेन बैक हेकि कोठी की जीवो ना अगेन बैक हेकि ब्लड को जीवो बट 17 लीटर वाला बैक हेकि जीवो बट मैक्सिमम 3 लीटर वाला रही जाए तो सेही 3 लीटर फ्लूइड जदी रही जीवो ताले ब्लड वेसल भीतर ऑस्मोटिक बैलेंस ऑब्वियसली डिस्टर्ब होबो सो से 3 लीटर फ्लूइड को अगेन ब्लड रे मिसिया अछि तो 3 लीटर फ्लूइड को अगेन मिसिया पई दैट इज द हमें कहि परिया लिम्फेटिक वेसल इज देयर ठीक अछि लिम्फेटिक वेसल इज देयर तो कोन आंसर आमे जनरली कहि परिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड बा टिश्यू फ्लूइड बोथ ए एंड बी लीफ रो काम कोन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू ब्रेन रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड रिटर्न आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी टू लिम्फ नोड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स कोन हो लिम्फ बा ताको हम जा कहू टिश्यू फ्लूइड देखो सेही टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ केते बळे कहया जेतेबेले सपोज एटा हो हार्ट तर हार्ट हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जेतो आसिला देन सोट कोन हला ना एटा हो सपोज दिस इज वेन एंड सपोज दिस इज आर्टरी तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आनला वेन टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आनला सपोज दीज आर द सेल्स तो एवरी सेल कोन करिवे ना जनरली ऑक्सीजनेट को नेबे तो ऑक्सीजन को नबा पई दैट इज ब्लड जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रिलीज हो ताको हम कहले टिश्यू फ्लूइड जेहेतु टिश्यू भीतर को आसी गला देन मु कोन कहली ना 20 लीटर वाला डेली दिन को आसीबो बट ता भीतर 17 लीटर अगेन बैक हेकी पळेबो वेन को बट जो 3 लीटर रही जीवो से 3 लीटर को बैक करिया पई जनरली गोटे लिम्फेटिक वेसल थिबो से लिम्फेटिक वेसल कोन करिवो ना जो रेस्ट 3 लीटर फ्लूइड रही जीवो ताको नेकी वेन रे मिसेइबो दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल एंड जनरली सेही टिश्यू फ्लूइड जेतले लिम्फ रो वेसल भीतर को जीवो बारी ताको कहे जे सेही टिश्यू फ्लूइड जेतले लिम्फ वेसल भीतर जीवो ताको हम कहे जनरली लिम्फ बोली लिम्फ कहे जहा टिश्यू फ्लूइड कहे से आंसर इज सी समस्त आंसर दैट इज सी नेक्स्ट केते फास्ट तुम आसी आंसर देलनो चलो ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन 136 वाचिंग तो टारगेट करिया दैट इज 150 प्लस करिया पई चलो आंसर दियो बढ़िया क्वेश्चन प्रीवियस 20 ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कले हबो 100% हबो देखो हमें जानि छे ए ब्लड ग्रुप रो एंटीजन प्रेजेंट इन ए व एंटीजन प्रेजेंट इन द आरबी सरफेस एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड डोनो ग्रुप ए हो आंसर कोन हबो अरे कोठी पचारछ ओ आर आंसर कटि जाई छि की दैट इज एटी कोन हबो एटी हम आराम से करि परिया ए ब्लड ग्रुप रो एंटीजन टा प्रेजेंट अछि आरबी रो सरफेस रे ए एंटीजन एंटीबॉडी बी ए ब्लड ग्रुप को ए वाला देई परिबो ओ वाला देई परिबो ठीक अछि बी ब्लड ग्रुप रो एंटीजन जनरली बी ब्लड ग्रुप रो एंटीजन होची बी कोड प्रेजेंट थिबो ना आरबी रो सरफेस प्रेजेंट थिबो एंटीबॉडी कोन एंटीबॉडी होची ए सेम दी ए बी ब्लड ग्रुप रो एंटीजन ए और बी एंटीबॉडी नील ओ ब्लड ग्रुप रो दैट इज एंटीजन इज नील एंटीबॉडी इज ए एंड बी बढ़िया समस्त ठीक अछि चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन बढ़िया क्वेश्चन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं क्वेश्चन कौन आंसर आंसर दियो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एंड ए क्वेश्चन करी करी बहुत थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करले एई वाला क्वेश्चन जमा भूल करिवनी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहार मोलुस्क आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का परफेक्ट आर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होची आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का मु तुम मन रखिया पे कहितली जो गीत बाहर तला ओमागो टुरु लव बोली तो ओ एम ए दैट इज ओ मींस होची ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एम फॉर होची मोलुस्का एंड ए फॉर होची आर्थ्रोपोडा तो स्ट्रिक्टली मन रखियो ताले क्वेश्चन पचारला डायरेक्ट क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का वेयर इज द ऑप्शन आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का नेक्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन बढ़िया क्वेश्चन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं क्वेश्चन आंसर दियो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनिलिडा आउ कड़ाटा बढ़िया एठी नै कि चारटा क्वेश्चन तुम पचरा हबो फटाफट को कि जनरली नेरिस इज एन डायोसियस और मोनोसियस हु कैन से एनिलिडा कड़ाटा समस्त का आंसर परफेक्ट एंड को कि जनरली एनिलिडा रे गोटे एग्जांपल पचाली नेरिस इज एन डायोसियस और मोनोसियस हु कैन से नेरिस इज एन डायोसियस और मोनोसियस ए क्वेश्चन आंसर सइला तुमको आसीला चलो नेरिस इज ए डायोसियस और मोनोसियस क्लोज सर्कुलर सिस्टम होची एनिलिडा कड़ाटा तो को कि नेरिस इज ए डायोसियस और मोनोसियस नेरिस इज एन डायोसियस मन रखियो नेरिस इज डायोसियस ऑर्थोर्म आ लीच बा जोटा के हम कहजे जियानाला आ जोको एटा मोनोसियस ना डायोसियस ऑर्थोर्म एंड लीच आर मोनोसियस ना डायोसियस हु कैन से ऑर्थोर्म एंड लीच आर मोनोसियस और डायोसियस ऑर्थोर्म लीच और मोनोसियस एंड नेरिस होची डायोसियस मते को कि नेफ्रिडिया इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम नेफ्रिडिया टा जनरली को फाइलम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को नेफ्रिडिया इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम हु कैन से परफेक्ट समस्तिंगर नेफ्रिडिया इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा देन मते को कि प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम बढ़िया अछि समस्तिंगर एनिलिडा इज द राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम कोन हो प्रोबोसिस ग्लैंड ता प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकोडाटा बढ़िया देन मते को कि जनरली एट जे हमने क्वेश्चन पचरिया बेटा फाइटिंग फिश इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फाइलम बेटा फाइटिंग फिश पिला एपेल स्नेल पिंकटाडा पॉल ऑस्टल सेपिया कटल फिश लोलिगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश सी ये कार एग्जांपल बेटा फाइटिंग फिश कार एग्जांपल बेटा फाइटिंग फिश हेमिकोडाटा तो एग्जांपल ऑस्टियोसिस दैट इज कॉन्ड्रियोसिस और ऑस्टियोसिस रहला बेटा फाइटिंग फिश ऑस्टियोसिस हेमिकोडाटा एग्जांपल होची बालांग्लोसस एंड सैकोग्लोसस इट्स होम थैंक यू तो दैट इज हम कोन पढले हां हला बालांग्लोसस सैकोग्लोसस दीज एन एग्जांपल ऑफ हेमिकोडाटा एंड जनरली आ मु जो क्वेश्चन पचाली पिला एपेल स्नेल पिंकटाडा पॉल ऑस्टल सेपिया कटल फिश लोलिगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश दीज आर एग्जांपल ऑफ एनिलिडा देन मते को कि मु एग्जांपल देले स्कॉर्पियो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हु कैन से स्कॉर्पियो shows open circulatory system or closed circulatory system स्कॉर्पियो टा कोन जय जगन्नाथ स्कॉर्पियो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्कॉर्पियो टा जनरली कोन आर्थ्रोपोडा एग्जांपल एंड हम जानि छे मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा होची ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट देन मत को कि मालपीजियन टिबुल इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम मालपीजियन टिबुल कोन हो मालपीजियन टिबुल इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम को मालपीजियन टिबुल इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम आर्थ्रोपोडा बढ़िया देन मते को कि जनरली फ्लेम सेल इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एस्की हेलिमिथेस दिस सेंटेंस इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लेम सेल is an excretory organ of Aschelminthes. It is perfect or imperfect. कौन होगा? Wrong. Flame cell is an excretory organ of Platyhelminthes. Then mo कि dorsoventral flattened body को phylum show करिवो dorsoventral flattened body. Which phylum will show dorsoventral flattened body? बा backside and front side दिटा को चेप्टा कुर्मी बोली जाए कहा कोई परिया. Dorsoventral flattened body will show which phylum? Platyhelminthes. बढ़िया. Generally round worms are grouped under which phylum? Round worm मानको generally को phylum under रखिया round worms. Who can say?
round worms are generally round worms are generally round worms are grouped under which phylum? समस्त आंसर ठीक अछि. राउंड वर्म टा कोन हबो? इट इज आस्किलिम्थेस. बढ़िया. एई भया डेडिकेशन रखो, बढ़िया से आंसर दियो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन धर तुम पचरा हबो. Asteraceous starfish, Echinus sea urchin, Cucumaria sea cucumber, Ophiura brittle star. These are example of which phylum? Asteraceous starfish, Echinus sea urchin, Cucumaria sea cucumber, Ophiura brittle star. These are example of which phylum? कौन आंसर? को phylum र example? Echinodermata starfish. बढ़िया. चलो ठीक है समस्त घर. तो ये एनिमल किंगडम र किछटा. देन अच्छा हम जदी पचारिया जनरली रेप्टाइल्स आ बर्ड्स आ मामल्स एमान भितर को माने बॉडी रो टेम्परेचर को रेगुलेट करि परिबे? रेप्टाइल्स बर्ड्स आ मामल्स. क्वेश्चन जदी एमती पचारा रेप्टाइल्स बर्ड्स मामल्स आको भितर किए पोइकोथम किए होची होमियोथम? रेप्टाइल्स बर्ड्स मामल्स दैट इज पोइकोथम किए एंड होमियोथम किए? बर्ड्स एंड मामल्स होचंदी जय माणिकेश्वरी. जय माणिकेश्वरी. एप्स आ मामल्स. एप्स आ मामल्स कोन? ओके. रेप्टाइल होची पोइकोथम. बढ़िया समस्या आंसर. चलो तापर हम जदी जनरली क्वेश्चन पचारिया सिंगल सर्कुलेशन जो मानकर शो करिवो सिंगल सर्कुलेशन फिशेस माने को सर्कुलेशन शो करे? सिंगल ना डबल? फिशेस माने को सर्कुलेशन शो करे? रेप्टाइल्स पोइकोथम्स, एप्स एंड मामल्स हो जनी होमियोथर्म. परफेक्ट. फिशेस शो करिवो सिंगल सर्कुलेशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रहिबो. in an open circulatory system there is no heart, there is no need of a blood vessel, there are open space or sinuses in the body. कोन हबो? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो मोलुस्का आ आर्थ्रोपोडा शो करिवो तो सेमानकर जनरली ऑल ऑफ द अबव. परफेक्ट. which of the following has a closed type of circulatory system? देखो एग्जांपल पचारला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एग्जांपल कोन? एनिलिडा कोडाटा हम जानि छे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आंसर दियो किए शो करिवो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? शुभस्मिता, अंशुमान, शुभंकर, मिस्टर किलर. आंसर कोन हबो? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. हमें जानि छे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किए शो करिवो? एनिलिडा आ कोडाटा. एंड देखो कॉकरोच टा कार एग्जांपल? आर्थ्रोपोडा. मोलुस्का आर्थ्रोपोडा होची ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हबनी. फिशेस एंड जो देखो स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो टा कार एग्जांपल? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा टा होची ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हबनी. मोलुस्का. मोलुस्का टा होची कोन? मोलुस्का होची कार एग्जांपल? मोलुस्का आर्थ्रोपोडा. मोलुस्का टा होची ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हबनी. फिश. फिश टा होची ओटा कोडा टंडर रे जाउची ना नहीं? सो कोडा टंडर जाउची माने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. समस्त घर ठीक अछि. which of the following has a closed body vascular system? बा सेही तमे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भाबो. पचार जे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रो क्वेश्चन. कॉकरोच ना हाइड्रा ना स्पंज ना अर्थम? कोन हबो? कॉकरोच, स्पंज ना हाइड्रा ना अर्थम? कोन हबो? जानि जे कॉकरोच रो होची कोन? ओपन हबनी. मोलुस्का आर्थ्रोपोडा होची ओपन. हाइड्रा. हाइड्रा टा कार एग्जांपल? हाइड्रा होची सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा रो सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. स्पंज. स्पंज रो कोन? पोरिफेरा. पोरिफेरा माने सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. अर्थवर्म टा कहार एग्जांपल? अर्थवर्म टा होची गोटे एनिलिडा र एग्जांपल. जियानाला टा होची मोनोसियस आ एनिलिडा टा होची गोटे एग्जांपल ऑफ अर्थवर्म इज एन एग्जांपल ऑफ एनिलिडा. एंड एज यू नो दैट एनिलिडा विल शो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एनिलिडा कोडाटा क्लोज. सो आंसर इज अर्थवर्म. क्वेश्चन टा दैट इज आंसर कोन हला? अर्थवर्म ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट जिबा सिंगल हार्ट सर्कुलेशन अकर्स थ्रू. देखो सिंगल हार्ट सर्कुलेशन सिंगल हार्ट सर्कुलेशन अकर्स इन. बा तुम भाबो कि कहार चैम्बर होची सिंगल सर्कुलेशन किए शो करिवो? सिंगल सर्कुलेशन कोन आंसर? कोन आंसर?
तो ए आंसर दियो सिंगल हार्ट सर्कुलेशन इज फिशेस फिशेस मानकर टू चैम्बर हार्ट एंड जो मानकर टू चैम्बर हार्ट से मानकर सिंगल सर्कुलेशन आ बाकी जो पिला माने रहउछन 150 तो सब पिला मानकर रिक्वेस्ट थला कि फिजिक्स क्लास कोन पय होउनी एंड कमेंट सेक्शन में पूरा फुल थला कि मैम को देह भलो होला ना नहीं फिजिक्स क्लास कोन पय होउनी तो तमरो जो 7टा रु 8टा ए लाइव सेशन परे जनरली फिजिक्स क्लास हो बनजा मैम को फिजिक्स क्लास हो तो सम्मान से जॉइन करिवो एंड फिजिक्स को पूरा बेस रु टॉप लेवल को नेकी चलो जेमती एग्जाम रे भलो करिवो चलो नेक्स्ट कोन हबो फोर चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन जनरली फोर चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन फोर चैम्बर हार्ट कार कोबरा टर्टोइस सालमंडर क्रोकोडाइल आमे जानि छे जनरली फिशेस मानकर बा जनरली जो माछ मानकर टू चैम्बर हार्ट आम्फिबिया बा जो बेंग माने रहले बा उभयचर प्राणी रहले आम्फिबिया और रेप्टाइल्स एमानकर जनरली कोन ना थ्री चैम्बर हार्ट एंड जनरली बट एक्सेप्शन गोटे रेप्टाइल गोटे सरीसृप जे कि क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल रहउची फोर चैम्बर हार्ट तो ऑप्शन डी होची दैट इज फोर चैम्बर नेक्स्ट चलो बंडल ऑफ हिज कंसिस्ट ऑफ राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच पर्किंजी फाइबर एवी बंडल कोन हबो ठीक तो बंडल ऑफ हिज कंसिस्ट ऑफ कोन आंसर 11 चैप्टर इंपोर्टेंट कोन कहि दवा डी ऑप्शन है सी और डी बंडल ऑफ हिज पर्किंजी फाइबर आउ एवी बंडल दैट इज बंडल ऑफ हिज कंसिस्ट ऑफ दैट इज एसओ नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिज पर्किंजी फाइबर तो बंडल ऑफ हिज रे हम काई कहि पने राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच बोली कहि परिनी काई राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और देन पर्किंजी फाइबर ना ए बी सी डी यदि हम परफेक्टली देखिया दैट इज सब ऑप्शन भी हेई परियो ए बी सी डी हेई परियो चलो नेक्स्ट बा बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व इज फाउंड इन जनरली बाइकस्पिड बा मिट्रल वाल्व टा काहा का भीतर देखा जाय इजी क्वेश्चन आकु नै कि 10टा खंड क्वेश्चन पछरिया कोन आंसर दैट इज बाइकस्पिड वाल्व आ बा मिट्रल वाल्व टा कोथरे जनरली प्रेजेंट थाए को that is bicuspid valve होची क्वेश्चन होची bicuspid valve that is left atrial left ventricle and bicuspid valve जेतले क्लोज हो को प्रकार हार्ट साउंड फॉर्मेशन हो कोन हो कोन हो that is bicuspid valve and mitral valve जेतले क्लोज हो को प्रकार हार्ट साउंड फॉर्मेशन आंसर होची राइट atrial राइट ventricle bicuspid valve और mitral valve present between the left atrium and left ventricle but heart sound production कौन हो lob ना dop what is the heart sound will produce when the tricuspid and the bicuspid valve will close and समस्त का आंसर होची lob बढ़िया then मते को कि that is when the heart sound dop is produced मोर सेंटेंस को होची the heart sound dop is produced during the opening of semilunar valve ये सेंटेंस ठीक है ना भूल the heart sound dop is produced during the opening of semilunar valve ठीक है ना भूल यार आंसर दियो the heart sound dop is produced during the opening of semilunar valve that is wrong semilunar valve ro closing हला बेले heart sound generally formation हुए dop टा dop is produced during the closure of semilunar valve तो next question जीवा tricuspid valve तो आसीबो तुमको tricuspid valve bicuspid valve आसला माने tricuspid valve तो ऑटोमेटिक आसीबो तापरे को caudai tendini are found in which structure the caudai tendon is found कौन हो caudai tendon टा कोड फाउंड है देखो this is the heart and I am already कहिचे this is the not structure of heart generally heart होची clean fist like structure suppose the ventricle this is the atria and this is the ventricle तो the projection of ventricle जहा को हमें caudai tendon बोली कहि and ventricle जो projection रहला तापर जो muscles था that is called as papillary muscle तो sorry the projections are called as column नहीं करनी column नहीं
corneae and columni corneae ऊपर जो muscles रहिला ताको हमें कहले papillary muscles and tricuspid valve bicuspid valve टू ये जो papillary muscles रो लागि थाए कोन ना कडाई टेंडिनी जेतोले जनरली ब्लड ता वेंट्रिकल भीतर स्पीड ले आसीबो तो दैट इज द ट्राइकस्पिड valve और bicuspid valve को स्ट्रक्चरली सपोर्ट दवा पई हेल्प करे कडाई टेंडिनी द प्रोजेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज columni corneae एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेंट्रिकल जो columni cornea ऊपर मसल देखा जाए papillary muscle रो कडाई टेंडिनी बाहर थाए टुवर्ड्स द tricuspid valve and also towards the bicuspid valve and the most important function of कडाई टेंडिनी that is to give the structurally support to the tricuspid and bicuspid valve during the transfusion of blood to the ventricle. तो आंसर कौन हो ventricle of heart. चलो नेक्स्ट ventricles are thick walled as compared to the atria. Generally हमें जब atria और ventricle भीतर comparison करिया as you know that the volume of ventricle also कौन volume of ventricle is larger than volume of atria. Same ventricle ता thick walled कौन पाई it is to receive the blood from atria ना it is to present on the posterior side ना it has to pump. कौन आंसर आंसर कौन हो 143 वाचिंग लाइक होची 243 हम मिचरे 143 वाचिंग लाइक होची 103 तो कौन हो वेंट्रिकुलर थिक वॉल एज कंपेयर टू एट्रिया बिकॉज़ इट हैज टू पंप ब्लड. हम जानि छे बढ़िया जिंस जेतले कोन पई वेंट्रिकल तू कोन पई हार्ट को तो वाल टा कोन पई थिकनेस वेंट्रिकल ए आंसर दबो काहे कि ना जनरली मु कोन करछि ना मु मोर जो राइट वेंट्रिकल रहिला लेफ्ट वेंट्रिकल माने तले पंप करछि ब्लड काहे कि ना मु ब्लड को पंप कले ही राइट वेंट्रिकल जाउछि लंग्स पागु आ मु ब्लड को पंप कले बा वेंट्रिकल टा पंप कले लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाउछि टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स थ्रू द डोर्सल आउटा राइट वेंट्रिकल लंग्स जाउछि थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. So it has to pump the blood. 63C बढ़े. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो papillary muscles. एबे मु तुमको कहली papillary muscle को नेकरी जनरली हमें जानि छे ventricle जो रहिला this is the ventricle, suppose this is atria, this is ventricle. तो ventricle muscle रो जो ventricle wall रो projection को हमें कौन कहले columni corneae. columni corneae जो प्रोजेक्शन ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट थाए ताको हमें कहले papillary muscles. papillary muscle रो जो जनरली जो स्ट्रक्चर ता बाहर की जाई थाए कडाई टेंडिनी पाकू ताको हमें कोन कहले सॉरी papillary muscle रो जो स्ट्रक्चर ता बाहर की जाई थाए tricuspid bicuspid valve पाकू ताको हमें कहले कडाई टेंडिनी. ताले क्वेश्चन पचाला papillary muscles आर लोकेटेड इन heart ventricle of human ना heart ventricle of human कॉमा आंसर इज ए. ताले कोन हो हार्ट वेंट्रिकल. चलो बढ़िया नेक्स्ट जीवा पर्किंजी फाइबर आर फाउंड इन देखो जो साइंटिस्ट जने थिले ताको नाम होची पुर्किंजी को माने पढंती पुर्किंजी को माने पढंती पर्किंजी व्हाटएवर यू से. तो पुर्किंजी फाइबर टा कोड फाउंड थाए एंड जानि छे हमें दैट इज ब्रेन किडनी स्किन एंड एटा हियर नो हार्ट. तो कोन आंसर दैट इज हमें जानि छे पर्किंजी फाइबर हार्ट रे. ठीक अछि हार्ट. चलो which of the following has thickest wall. आमे जानि छे जनरली जो हार्ट रो चारटा चैम्बर रहिला सबुठारु मोर थिकेस्ट कोटा राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल. आमे तो जानिले वेंट्रिकल वॉल रो थिकनेस ता अधिका बट वेंट्रिकल रो जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ता भीतर जदी कंपैरिजन करिया को कहार चैम्बर ता मोर थिकनेस एंड आंसर इज कोन लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड टा पंप करिवो सेही ब्लड टा ही बॉडी रो डिफरेंट पागु जिवो. सो दैट गोटे मैक्सिमम प्रेशर देकी ब्लड को पठियार अछि जेते मैक्सिमम प्रेशर दबो सेते बैकवर्ड भी प्रेशर पड़िवो. तमरो गोटे फिजिक्स रो अछि दैट इज फिजिक्स रो कोल जेतला हम गोटे गन को छाडू छे स्प्रिंग धरि गिरी तो गोलीटा बाहर की गला बेले गोलीटा तळे बाहर की जाउची हमर बंदूक ऊपर गोटे प्रेशर पडुची. तो जनरली व्हिच लॉ एटा मॉक टेस्ट कोड मिलिबो. मॉक टेस्ट जते हम एनरोल करे चाहछो विद्यासागर क्लासेस तरफ रे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा होची 2000 मॉक टेस्ट ओनली 500 टंका रे. तो तमे चाहिबो जदी ताको एनरोल करि परिबो. तो समस्त जो माने अच्छा बना जाय हमकर क्लास स्टार्ट हो 8 टा रे
तो पिला मानकर कमेंट भी आस्तला कि बने मैम को क्लास कहीं होउनी बोली एंड मु तुम कहि दितली देह खराब थिला बोली सो मैम कर देह भलो हो गेलानी आज स्टार्ट हो 8 रे तो जेति की जण एबे वाच करछो 153 कि मु देखिबी जेंति कि समस्त बने मैम को क्लास करूथिबो बिकॉज़ फिजिक्स रे तुम मानकर डिमांड बहुत अधिका थिला सो जॉइन करियो सब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो थिकेस्ट वाला दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल देन हार्ट ऑफ हार्ट व्हिच इज सो इंपोर्टेंट और व्हिच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ हार्ट बा जनरली हृदय रो हृदय के हार्ट ऑफ हार्ट as you know that human heart is myogenic in nature जदि ह्यूमन हार्ट गोटे पंप हुए तो ह्यूमन हार्ट जदि गोटे पंप हुए तो पंप को स्टार्ट करने पे बाहर कौन इंपल्स आसेनी ह्यूमन हार्ट ऑटोमेटिकली निज निज को स्टार्ट करि पारे स्टार्ट करने पे जो स्विच टा दरकार बा जो इलेक्ट्रिक इंपल्स पे जो स्विच टा दरकार दैट स्विच इज एसए नोड सो दैट एसए नोड इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ द हार्ट परफेक्ट चलो एसए नोड इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द हार्ट ओके नेक्स्ट बा and also it is called as pacemaker of heart. SA node is located in that is in which area of atria SA node is located. Heart ro को area रे बा atria रो को area रे generally SA node टा located. पूरा strictly मन रखियो right upper corner of right atrium. According to NCERT right upper corner of right atrium. Right upper corner of right atrium रे generally कौन था SA node. ठीक अछि आंसर इज राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया ओके एटा अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया देन जदि तुमको 8 क्वेश्चन पचार थांदा एभी नोड टा कोठी लोकेटेड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड देन आंसर देता तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया मन रखिबो पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड एंड पेस सेटर ऑफ हार्ट इज एबी नोड पेस मेकर के पेस सेटर के चलो देन सेकंड क्वेश्चन 69 ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक ना न्यूरोजेनिक ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक ना न्यूरोजेनिक ऑलरेडी हम डिस्कशन करले बॉडी रो बाहर जदी हम ह्यूमन हार्ट को काढी की थोई दबा किछि समय हार्ट बीट करिवो किछि समय पर्यंत मींस 5 रु 10 मिनिट एते भी अधिका नाही कि घंटा घंटा धरि की बट जदी कोनसी केस रे ह्यूमन हार्ट को ट्रांसप्लांट करियार अछि जेंति हम भुवनेश्वर एम्स रु दिल्ली एम्स को जिबार अछि सेही केस रे जनरली प्रिजर्वेटिव दिया जिवो केमिकल्स दिया जाय कि डॉक्टर माने ताको नेगिरी एते बड जाई पारे बट नेचुरली जो देखिबा बॉडी रो बाहर कर दबा तो अल्प टाइम पई बीट करिवो जे पर्यंत हार्ट मसल को ऑक्सीजन पहुंचुतिबो एंड ह्यूमन हार्ट दैट इज स्टार्ट हो पई ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो एंड स्टार्ट करे पई एसए नोड इज देयर चलो देन होची इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एई पेज ता तमरा लास्ट क्वेश्चन तापर तमरा फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स जनरली जॉइंट्स रो इन्फ्लेमेशन ऑफ ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड तम जे देखिबो तमर जो सैंपल पेपर ओयूटी तरफ पब्लिश कराइची तो से सैंपल पेपर रे भी आको नेगिर क्वेश्चन अछि दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड कोन हो हजार थर नीट रे पचारची एंड ओयूटी रे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर रे भी क्वेश्चन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इट इज कॉल्ड एज गॉट मन रखियो एंड हम जानि छे रिकेट्स कोन विटामिन डी डेफिशिएंसी ले गोडोटा टिके बंका हे गेला बेले देखा जाय दैट इज रिकेट्स एंड बड़ पिला मानो केस रे ओस्टियोमालेशिया देन अछि टिटानी कोन वाइल्ड कंट्रैक्शन जो तुम मसल को पूरा हेवी कंट्रैक्शन करछो वाइल्ड कंट्रैक्शन करछो एंड लो कैल्शियम लेवल रे दैट इज कॉल्ड एज टिटानी एंड ओस्टियोपोरोसिस कोन ओस्टियोपोरोसिस होची दैट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर कोन होबो जनरली एस्ट्रोजन लेवल ता जते कमी कमी जीवो बोन मास ता जते कमी कमी जीवो एंड बोन मास जते कमी कमी जीवो फ्रैक्चर होबार चांसेस भी अधिका थिबो चलो बढ़िया अछि नेक्स्ट बा Myasthenia gravis is autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction leading to the fatigue, weakening and the paralysis of skeletal muscle. चलो कौन आंसर सर OUT वेटेज केवल पीसी जो तर अधिका थिबो PCB एंड PCM सेत्रा हो कोन हो Myasthenia gravis autoimmune disorder and affecting neuromuscular junction मन रखिबो MGNP Myasthenia gravis रे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो पैरालिसिस हबो देन होची प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन आंसर होच कोन एटा बट ए क्वेश्चन को टिके जदि एनालिसिस करियो तार ऑप्शन ओडा कोन हबो सपोज प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल रो डिजेनरेशन हबाटा कोन कहै छै डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होची डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल रैपिड स्पास्म बा वाइल्ड कंट्रैक्शन इन मसल को पूरा वाइल्ड कंट्रैक्शन करिवो ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इज कॉल्ड एज टिटानी
स्पाम्स हे जीवो देखो जनरली वर्कआउट कला बेले जदि तुम हेवी वर्कआउट करिवो पूरा वाइल्ड कंट्राक्शन करिवो पूरा इंटेंस वर्कआउट करिवो से टाइम रे जदि लो कैल्शियम लेवल हे गला तो दैट इज स्पाम्स होबा एंड दिस कॉल्ड एज टिटानी देन होची इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को जाय आर्थराइटिस बा आर्थराइटिस जहा तुम कहि परिवो तो आर्थराइटिस होची इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड वाइल्ड कंट्राक्शन ऑफ मसल टा लो कैल्शियम लेवल रे कोन होबो दैट इज टिटानी डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड माइस्थेनिया ग्रेविस होची ऑटोइम्यून डिसऑर्डर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड और पैरालिसिस नेक्स्ट जीवा प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव स्केलेटल मसल आसीबो तो डिजेनरेटिव स्केलेटल मसल माने हल्ला मस्कुलर डिस्ट्रोफी देन टिटानी कोन टिटानी होची लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड ना हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड ना लो एटा चलो हैला नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एज रिलेटेड डिसऑर्डर कोटा होची गोटे एज रिलेटेड डिसऑर्डर जोटा कि बेसिकली एज रिलेटेड डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज द बोन मास जते एज बढ़ी बढ़ी जीवो सेते बोन मास टा कमी कमी जीवो तो दैट इज कॉल्ड एज डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल कोन आंसर ओ सॉरी डिजेनरेटिव स्केलेटल मसल होची मस्कुलर डिस्ट्रोफी इट इज ओस्टियोपोरोसिस देन लास्ट क्वेश्चन तुम पे होमवर्क रहला जो माने वाच करछो दैट इज होमवर्क तुम पे रहला तो कमेंट करिवो एटा लास्ट क्वेश्चन चलो तो ये रहला तमरा आजिरा सेशन तो बाकी जहार जहा डाउट अछि कमेंट करिवो देन मैम को क्लास इमीडिएटली स्टार्ट हो सो दैट समस्त थाओ 167 वाचिंग तो क्लास को एंजॉय करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट